Hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. My name is Zara and I'm gonna yap again. The reason why I look like this is because मैं अपना मेकअप और स्किन केयर आपके साथ बात करते करते करूँगी. So yeah, by the way, आज मैं उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल और लाइफ में चेंज किया जिसकी वजह से आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ अ लिटिल मोर. What is that word? What is that word? Those manifestation girlies use. Um, um, Self concept. Self concept. Yes. Little things that I did that helped me build my self concept a little more, and I love myself a little more now. I'm not completely there, but little steps. Little steps. Chote chote kadam. The very first thing that I started doing is I started looking at the situations in a positive way. भले ही कितनी भी गंदी सिचुएशन हो, मैं उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव एंगल निकाल लेती हूँ क्योंकि हर सिचुएशन में कोई ना कोई एक पॉजिटिव एंगल होता है. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हैदराबाद में बहुत बारिश होने लगी एंड जिसकी वजह से मेरे पूरी कॉलोनी की मेरे पूरे घर की लाइट चली गई. ठीक है, एंड आई हैड टू डू एन असाइनमेंट एट दैट मोमेंट. आई हैड अ डेडलाइन टू मीट एंड मुझे वो असाइनमेंट करना था और सारी लाइट चली गई एक्सेप्ट फॉर माई हॉल, जहाँ पे मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, जहाँ पे मैं अपना लैपटॉप चार्ज कर सकती हूँ, जहाँ पे फैन वगैरह सब चल रहा था, जहाँ पे मैं कंफर्टेबली बैठ के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकती थी. और मैं अगर पुरानी ज़ारा होती, आई वुड हैव बीन सो पिस्ड कि जब मुझे असाइनमेंट करना होता है, जब मेरी डेडलाइन होती है, तभी लाइट जानी होती है, तभी सब कुछ होना होता है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ होना होता है, कुछ नहीं, ये है वो है करके मैं बहुत रैंट करती, रो देती, पता नहीं शायद अपना असाइनमेंट भी ना करती. बट I looked at it in a positive way कि thank God अल्लाह मियाँ ने मेरा इतना साथ दिया कि वाईफाई चल रहा था, मेरा मेरा असाइनमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ. ठीक है, आई जस्ट हैड टू गेट अप फ्रॉम माई रूम एंड शिफ्ट टू द हॉल वाला प्लेस जहाँ पे मैं वापस से कंफर्टेबली अपना काम करने लगी. कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ है मेरे किसी भी चीज़ में एंड आई वाज सो 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 ग्रेटफुल दैट पूरी कॉलोनी में लाइट नहीं है, पूरे घर में लाइट नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैं कंफर्टेबली काम करूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे मेरा वाईफाई प्लेस्ड है, वहाँ पे लाइट नहीं गई है. तो दैट इज वन थिंग दैट आई स्टार्टेड बीइंग मोर ग्रेटफुल अबाउट द लिटिल पॉजिटिव थिंग्स rather than focusing on the bigger negative things. Doing that started making my life so much easier and the space in my brain so much more calm and positive. पहले ना जब मेरे साथ कोई चीज़ गलत हो रही होती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं इतना सोचती थी, मैं ओवरथिंक करती हूँ, ठीक है, तो मैं इतना सोचती थी कि वो मेरे लिए ज़हनी अज़ाब बन जाता था. Now that I look at things in a positive way, it has been so much calmer and peaceful in my mind. Just a small change, okay? It's not even a big change, and I still have that temptations of focusing on the negative things. And one more thing, this whole thing made me realize is how much control I have over my mind. पहले my mind used to control me, ठीक है? Now I control my mind. It is so refreshing, so calm, so peaceful, boring at times, but it is so much better, and I'm so much happier and so much less irritated. The second thing that is kind of connected to the first thing is that I realize that जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है. Even though मुझे उस टाइम पे उस मोमेंट पे वो चीज़ समझ नहीं आ रही, I just sit there and I be like कि हाँ, बाद में समझ ही आ जाएगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ, क्या लेसन लेके आएगी मेरी ज़िंदगी में, क्या क्या इफेक्ट है इस चीज़ का मेरी ज़िंदगी में, मुझे समझ तो आ जाएगा. सो आई स्टे अ लिटिल मोर काम एंड अ लिटिल मोर कंपोज्ड. आई डोंट ओवर थिंक थिंग्स. इवन दो आई एम ओवर थिंकिंग थिंग्स, आई ट्राई टू मैनिपुलेट माई माइंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग कि हाँ, कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इसके पीछे भी, जो भी चीज़ मेरे ज़िंदगी में हो रही है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बाद में समझ आ जाता है, इवन दो मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ नहीं आ रहा होगा. अल्लाह मियाँ एंड यूनिवर्स इज नॉट माई दुश्मन कि whatever I manifest, whatever I want in my life will eventually find me, and even if it's not finding me, something better will find me. So third thing that I started doing is I started moving my body more often. पहले I used to
I am a very lazy person, okay, and I don't like, working much. I like relaxing. I like Netflix and chill. I like reading books and, you know, hours and hours of just sitting and doing nothing. In the end, I know that it's not healthy, not for my body, not for my mind. And I started moving my body a little more. And that little movement that I'm doing also tricked my mind into thinking that I'm being productive, and it saved me a lot of guilt. And one thing people don't realize is जितना बाहर वाले लोग हमको बोलते हैं ना कि तुम इतनी लेजी हो, तुम उठ नहीं रही हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, उससे ज्यादा हमारा खुद का माइंड हमें वो सब बोल रहा होता है. एंड इट इज 1000 times more negative, 1000 times more imposing, and 1000 times more authoritative, and it is so much worse. Those voices in my head also calm down a little. They go easy on me when I'm a little more productive. चौथी चीज क्या है? Fourth thing I did, fourth ही है ना, हाँ, fourth thing I started doing is I started reading more self-help books. Like पहले भी मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, but I started reading more of a self-help category. पहले मैं fiction पढ़ती थी, romance पढ़ती थी, blah blah blah, but I recently started reading books like, Secret and How to Master Your Emotions, and it helps me so much, and it helps me validate so many of my behavioral patterns. So many, it makes me feel like a human, that I'm not mad. It validates me in ways no human can validate. I can see why these books are so famous and these writers are so famous, because they know, in the end, they know what our minds are going through, what their minds were going through, maybe, and they decoded it so well. They explained it so well. Like, even 10 to 20 pages a day is enough. In fact, this whole video and the parivartan that I had is a result of reading all these self-help books and also the self-help podcast, which brings us to the fifth point, which is start following and start listening to the people who have a very positive mindset and who don't talk negatively, who don't demotivate you, who don't bully you. लोग करते हैं ये, ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग बुलिंग को एज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन लेते हैं कि तुमको बुली करोगे तो तुम मोटिवेट हो जाओगे. नो ब्रो, दैट इज नॉट गोना वर्क, बिकॉज इवन दो it might look like it is working, but in the end it is gonna play and trick your mind very badly. इवन तो तुमको फिजिकली चेंजेस नजर आ रहे होंगे, लेकिन तुम्हारा मेंटल हेल्थ और खराब हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से. लोगों को लगता है कि बुली करने से, डिमोटिवेट करने से, मजाक उड़ाने से लोगों को और मोटिवेशन आता है कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, इसने मुझे बॉडी शेम कैसे कर दिया, मैं तो इसको दिखा के रहूँगा या तो दिखा के रहूँगी. बट इवन दो उस चीज़ से फिजिकली तुम फिट नज़र आने लग जाओ या फिर जो भी होने लग जाओ, इन द एंड तुम्हारे दिमाग में जो बॉडी डिस्मॉर्फिया पैदा हो रहा है उसका क्या करोगे तुम? वो दिमाग में से बॉडी डिस्मॉर्फिया निकालना इज मोर हार्ड देन गेटिंग योरसेल्फ इनटू अ फिट बॉडी. आई विल नेवर सपोर्ट पीपल हु थिंक बुलिंग will motivate people, because it is the most disgusting, the most unpractical, the most, I don't know, the worst thing you can do to a person. Okay, in the end जितना भी बोलो, जितना भी कर लो, एक इंसान के अंदर से वो चीज़ नहीं आती है ना, वो नहीं करेगा. इनफैक्ट बुलिंग वगैरह से ना, जैसे मुझे ना जब कोई बॉडी शेम करता है, बुली करता है, मैं इनफैक्ट ऐसे हो जाती हूँ कि मैं उस स्पाइरल में ना और घुस जाती हूँ. मैं और बिंज ईट करने लग जाती हूँ, मैं और ओवर थिंक करने लग जाती हूँ, मेरा मेंटल स्पेस और खराब हो जाता है, मेरी पीस और खराब हो जाती है. द अलाइनमेंट बिटवीन माई माइंड एंड माई बॉडी गेट्स disrupted. Stop following people who kind of bully you into things. It might seem like it's right, but it's not right. Okay, you cannot, if you bully somebody into doing something that's wrong, in the end it's gonna mess with your brain. And आजकल ना बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि bullying disguised as, encouragement or motivation, it's wrong. Even though the right thing and the positive, path will take a little longer for you, it might seem a little slower sometimes, it might seem it's not like, it's not even helping, but in the end that is what is going to last longer. It's going to be more healthy and it's going to be much more good for your mental health. ठीक है, don't get tricked into bullying.
don't get bullied into doing something. It's wrong. It's gonna mess with your brain. Yeah. Another thing that I started doing was be a little softer when I talk to people. I'm not completely there. I still yell at people. I still lose my shit when I'm talking to people, but I still try to be a little softer towards people because that helps me be a little more softer towards myself. Even though I'm having a disagreement with people, even though people are not behaving themselves, I try to control what is in my hands and not what is out of my hands. Like, what is in my hands? The way I talk, my thoughts, my words, my actions, those are the things that are in my hand, and that is what I try to control. And now I have 10 more filters before I say something that is in my mind. पहले मेरे दिमाग में जो भी आता था मैं 2 बार सोच के बोल देती थी, कभी कभी 2 बार भी नहीं सोचती थी, अभी 10 बार सोचती हूँ और फिर बोलती हूँ कि क्या बोलना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है. अब मैं कम झगड़ों में पड़ती हूँ बिकॉज सामने वालों को एक पॉइंट पे रियलाइज हो जाता है कि वो मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता, वो मुझसे नहीं जीत सकता. मेरे फैक्ट मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ और वो चुप हो जाता है, वो डिफीट कर लेता है अपने आप को या फिर छोड़ के चला जाता है कॉन्वर्जेशन, which is saving me a lot of energy, a lot of time, and a lot of my mental health. So, again, a win win. Another thing I started doing is I don't remember which point we are in, 6, 7, I don't know. But one more thing that I started doing is giving myself more time to get ready. मैं ज़्यादा तैयार होने लगी, अपने आप को ज़्यादा टाइम देने लगी तैयार होने के लिए. पहले I used to फटाफट get ready, not even sometimes do my skincare, not apply sunscreen and just apply लिपस्टिक, वही लिपस्टिक को अपने गाल पे थोड़ा थूप लिया और निकल गई. अभी आई गिव माई सेल्फ टाइम, आई start getting ready prior to when I have to leave or have to do something, so that I have time to get ready, I have time to look at myself in the mirror, I have time to do my skincare, I have time to do my makeup, which made me love myself a little more. Pehle when I used to look in the mirror, I used to look at a person who's you know underconfident, who doesn't love herself, and I used to look at my flaws, and it's also helping me a lot with my confidence when I go out. I am not insecure or I'm not hiding any part of my body or fixing my hair or doing something when I'm talking to a certain person. पहले आई यूज्ड टू अवॉइड, ठीक है, मैं ट्राई करती थी कि मैं किसी से बात ही ना करूँ, मैं ट्राई करती थी कि हाँ इवन दो समथिंग इज रॉन्ग, अगर मेरे खाना गलत आ गया या फिर कुछ हो गया या फिर मुझे कहीं जाना है, I'm not able to navigate. पहले I used to avoid the conversations. Now I confidently go up and ask people. I'm having more conversations. I'm talking to more people, and it's helping me a lot with my personal life and confidence and talking skills and communication skills. So yeah. What else are we doing? I started keeping my space more clean. Okay, I started रेगुलरली क्लीनिंग माई स्पेस. पहले आई यूज टू गंदा एक बार साफ करती थी, फिर गंदा करो गंदा करो गंदा करो गंदा करो जब तक बहुत गंदा ना हो जाए, ठीक है, कि मैं वहाँ पे रह ही ना पाऊँ. फिर मैं उठूंगी और सब साफ करूंगी और फिर गंदा करती जाऊंगी टू अ पॉइंट पर वापस से वो इतना गंदा हो जाए कि मैं वहाँ पे रह ना पाऊँ और मैं वापस से साफ करूंगी और फिर गंदा करूंगी. इट वॉज अ साइकिल. नाउ आई रेगुलरली क्लीन माई स्पेस, आई रेगुलरली क्लीन माई wardrobe. It's much cleaner and it is helping me a lot with my mental health. Again कि लोग पहले जो बोलते थे ना कि क्लीन स्पेस इज क्लीन माइंडसेट, क्लीन थॉट्स, क्लीन माइंड, आई यूज्ड टू लाइक बकवास क्या ही है. बट नाउ I know, like, I can totally understand why people used to say that and where it was coming from. When you see a place that's very cluttered and unorganized and all over the place, now that is the kind of thoughts your brain will create. Unclear, all over the place, very negative, and that is not something we want. That is not something I want, and that is not something anybody in this world would want, I feel. Similarly, when your space is clean, organized, and nice, that is the kind of thoughts your mind will create. Okay, clean, organized, you know what you're doing, you're not procrastinating anymore, you're not lazy anymore, you're willing to do more work, you're willing to put in more work. So basically the state of your mind is equal to the kind of space you're living into, and what is the vibe of the space, what are you looking at as soon as you wake up, are you looking at your vision board, and that is where the vision boards come in. That is why people talk about vision boards, and vision boards actually work because what you see is what your brain is
tricking you into believing, when you're looking at a clean space, your mind and thoughts will be clean. I love this mascara. It is. I also kind of started eating more ghar ka khana rather than eating processed food like chips and everything. I still do eat processed food like chips, but it's very rare now. I don't regularly eat processed food, processed sugar, and it has improved so many things, not just mentally but physically. For me, eating less processed sugar makes your skin better. Now I think twice before I put anything in my body, because now I know that what I put directly in my body will directly impact my mind, my skin, my hair, my bloating, my everything. I'm shocked how much all of these things impact us and we ignore them. So yeah, I love dark lipsticks. Another thing that I started doing is staying away from screens. मेरा screen time अभी भी बहुत ज़्यादा है, but I still try to stay away from screens as much as possible. I read books. अगर मुझे कुछ लिखना है तो iPad में लिखने की जगह I'll try to sit with a paper and pen and write it down. मेरा screen time per हफ्ता 25 hours होता था. My weekly screen time was 25 hours a week. Okay, and that's a lot. I am giving my phone or my iPad or my laptop more than a day in a week, and that's a lot for me. I started reading books before I sleep rather than scrolling on my phone endlessly. Now when I wake up, I feel well rested. I don't feel drenched. I don't feel exhausted. हाँ, मुझे blush blindness से क्या कर लोगे? We are done with my makeup and also with my yapping. That is it for this video. I hope you liked the video. I hope you learned something from this video. I hope you apply some of these things in your life and love yourself a little more every day, because that is the sole purpose of this video. Okay, meet you in the next video. Until then, bye bye.